So the correct answer to this is +6. So how do we do that? Would anybody want to explain? सर हमारे पास 7 ऑक्सीजन है, तो आपने कहा था फोन वो हम लोगों ने रूल लगाना है, तो वो हम लोगों ने 7 इंटू 2 किया, सर वो 14 हो गया, तो -14 हमारे पास आ -14 हमारे पास नेगेटिव टोटल चार्ज है, और सर हमारे पास 2 पोटाशियम है, तो -12 टोटल नेगेटिव चार्ज है, और क्रोमियम हमारे पास 2 है, तो हम लोग 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 हमारे पास एटम्स हैं इसके, तो हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12 को, तो वो 6 हो जाएगा, और एक क्रोमियम की 6 आ जाएगी, और 2 क्रोमियम का 12 हो जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जस्ट वन थिंग, जब आप क्रोमियम की बात कर रहे हो, सो डोंट कॉल इट एन एटम, इट इज एन आयन, बिकॉज वो रिएक्शन के अंदर है ना, इट्स ओके आयन। सर। वेरी गुड, वेरी गुड। एनीबडी हु डजंट अंडरस्टैंड दिस, सबको समझ आ गया ये? ऑलराइट, नाउ लेट्स ट्राई टू डू एनालाइज दिस रिएक्शन। हमारे पास we are reacting magnesium with copper sulfate and we are getting copper plus magnesium sulfate. अच्छा, अब यहां पर looking at it हमें ऑक्सीजन अलहदा से नजर नहीं आ रही है, बिकॉज ऑक्सीजन इज पार्ट ऑफ सल्फेट, और वो सल्फेट ही रिएक्ट कर रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, एंड इन फैक्ट इट्स नॉट इवन रिएक्टिंग, इट्स स्पेक्टेटर आयन. So how do we analyze this? The best way is to look at the oxidation states. If you do oxidation state analysis, you'll be fine. So let's try it. सबसे पहले look at the element and give 0 to the element. So magnesium is 0, copper is 0. Now fun doesn't apply here. Why? Because इसमें ऑक्सीजन अलहदा से है ही नहीं, ये तो सल्फेट है, तो अलहदा से ऑक्सीजन होता तो हम फन को अप्लाई करते, बट यहाँ पे हम उसको नहीं करेंगे. So let's see. Sulfate has a -2 charge. This is something you need to memorize. Remember the ions covalent bonding में हमने पढ़े थे, polyatomic ions जिनमें ionic bonding भी होती है और covalent bonding भी होती है. So there were 7 ions. उनके formulas आपको याद होने चाहिए. Now let's look at the other ones. Because sulfate is -2, copper should cancel it out by being +2. And same for magnesium here. And now the reaction is much easier to analyze. Magnesium went from 0 to +2. So iski oxidation state increase ki hai. It has lost electrons and its oxidation state has increased. So we will say this is oxidized, which makes this a reducing agent. Similarly, copper went from +2 to 0. We will not say that copper sulfate is reduced. We will say copper is reduced because sulfate to utna hi hai. So copper is reduced and that makes it an oxidizing agent. In fact, you will see that this is a displacement reaction. Okay? Where a more reactive thing is displacing a less reactive thing. हमने group 7 में ही पढ़ा था जब हम periodic table पढ़ रहे थे, that fluorine was displacing chlorine, chlorine was displacing bromine and so on. That is displacement, but at the heart of it, it is just redox. So displacement reactions are always redox. So यहाँ से हमें इसका पता चल गया. Alright. So अब oxidation state analysis आप एक करोगे. I'm going to give it to you. Try to solve this one. It is balanced. Go on, try to do this. In fact, before you do that, just by looking at the equation, can you tell me why this is a redox reaction? बिकॉज सर आपने अभी बताया था कि पोटेशियम आयोडाइड है कि आयोडीन है, ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट है, अभी आपने बताया भी था. It's a reducing agent, but there is a much easier way to remember this. आयोडीन Element hai, so that's definitely redox. Do you see an element here? Yes. Which one? Iodine. Iodine. Yes, this is an element. And because element है पूरी equation में, that confirms कि redox है. MCQs में ये चीज बहुत use होगी because they ask you which one is not a redox reaction. So आप देखोगे जिसमें element है वो तो redox होगा, वो वहीं से आप निकाल लो. Okay, so go on. Do oxidation state analysis to figure out what is being oxidized and what is being reduced. Okay, so here's how you do this. Let's start. First, you have an element, so we put it 0. For the rest of it, use fun. Do you have fluorine, oxygen, nitrogen? No, we don't have any of that.
So now we just work with whatever the groups are. So potassium is group 1, so iodide must be -1. Potassium is group 1, so this whole thing is -2. Iodide is -1, sulfate is -2. ये वो हैं जो मुझे याद है. But copper मुझे देखना पड़ेगा. अच्छा, अब यहाँ पर copper should be +2. Why? Because to cancel sulfates -2, it must be +2. But यहाँ पे to cancel -1, copper must be +1. And that is the key here. ठीक है. सो अगर किसी ने याद किए हुए ना रटे मारे हुए, सो वो यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाएंगे. So let's see. So yes, as many of you have pointed out, copper has gone from +2 to +1, as you can see here. So copper is being reduced. So that makes it oxidizing agent. And iodide, यहाँ पर, some of the iodide, not all of it. You see, some of it is still staying -1. But some of it has gone to 0. So -1 say 0, that's an increase. So that means it is being oxidized, and that makes it a reducing agent. And no wonder potassium iodide is used as a reducing agent.